नमस्कार, मैं पूजा दरीचा के इस सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। और जो लोग हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर चुके हैं और जिनमें जो कुछ नए लोग हैं उनके लिए दरीचा का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। दरीचा एक प्लेटफॉर्म है पीपीएफ का, जिसमें हम लोग अलग अलग मुद्दों पर रिसोर्स स्कॉलर्स को, एक्टिविस्ट को और अलग अलग एरियाज में काम करने वाले लोगों के साथ बातचीत करते हैं और एक क्रक्स निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या ऑनगोइंग चीजें क्या चल रही हैं। तो आज इसी सेशन में हमारे आज के खास मेहमान हैं डॉक्टर दीपक भास्कर। सर ने पीएचडी किया है जेएनयू से और वो इसके पहले असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। अभी वो नागालैंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और आज हम लोग नॉर्थ ईस्ट के एक खूबसूरत राज्य नागालैंड पर ही बात करने वाले हैं। तो सर का जो एक्सपीरियंस है और नागालैंड की क्या एथनिसिटी है, क्या वहाँ पे ऑन ग्राउंड चीजें हैं, वहाँ पे किस तरीके की प्रॉब्लम्स है या किस तरीके का वर्क प्लेस है, इसके साथ ही कुछ और चीजें जो कनेक्टिंग होंगी बाकी कल्चरल कनेक्टिविटी से, उन चीजों पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो एक बार फिर से मैं सर आपका स्वागत करती हूँ और जितने लोग हम लोगों को ऑनलाइन जुड़ चुके हैं उन सबका स्वागत है। और ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ। ओवर टू यू सर। Thank you very much. First of all, I must ask the organizer that what language we would prefer, the bilingual or should be Hindi or should be English? So bilingual, because हमारे जो ऑडियंस है वो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों स्पीकिंग जोन्स हैं। Sure, thank you. So before I start talking about the specific topic that we have chosen, I must say thank you to Pooja ji, and thank you to, I must extend my gratitude to Policy Perspective Foundation to give me opportunity to speak on this platform, which is called DAREECHA. And however, this is the very first time that I have been part of PPF DAREECHA dialogue different times. So thank you very much for that. I would like to first tell about the university where I work, the Central City, Nagaland. Nagaland University, however, is a central university, but specifically it works in Northeast. There are extensions of research also, but primarily it is having just master courses and PhD and courses, but UG courses we don't have. I'm very new to Northeast because since 2011 to 22, I was working in Delhi University. Then I joined in 22 there in Northeast, Nagaland Central University. So I'm as new as anyone can be. But in 1.5 years, because my target was to know, to learn, because it was a very new place for me. I was the first time visitor there. And I started locating things as my interest was in that also. And I found very interesting things. That's why I agreed to come to DAREECHA and talk about this. Because जब मैं दिल्ली में था, since 2001 I was in Delhi for almost 2 decades. तो हमारे मन में भी, हमारे दिमाग में भी जो नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो परसेप्शन था वो बहुत अलग था. That was really different. But when I went there, the Professor Upendra Bakshi said one very important thing. That was that one can break truth very easily, right? But not the perception. So
जो परसीव्ड रियलिटी थी हमारी, जो हमने सुना था, उससे जो हमने बनाया था अपना परसेप्शन, अपनी सोच तमाम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, वो बहुत ही डेंजरस था, क्योंकि वो कहीं से भी इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, जस्टिफाई नहीं कर रहा था। So, जब मैं वहां पहुंचा तो देन इट बिकेम वेरी डिफरेंट। पहले तो सबसे पहली बात यही थी कि जब अपन नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, वी से नॉर्थ ईस्ट, that terminology itself had a lot of issues, because in social science, like I do work in science and international politics. So in social science especially, the terminology has a lot of value. So when we say Northeast, that itself somewhere goes wrong, because when in British era, the Kolkata was capital, so they actually, from Kolkata, the location of Kolkata, the longitude, latitude of Kolkata, was actually justifying the terminology called Northeast, right? But when in independent India, we have a capital in Delhi, Northeast, longitudinally, latitudinally, does not justify the terminology. That also being discussed there in Northeast, that we are not no more Northeast. Why we are called Northeast, right? So these very small, pointed things you will get in the discussion, in the Northeast itself. So that one thing is very much important, that we need to actually devise some terminological understanding to justify the geopolitical understanding of Northeast so-called. The second thing is that the interrelationality, right? We do not see things in terms of interrelationality. We see things in terms of isolation. That is very easier. Looking things in terms of isolation is an easier thing. That's why every people, it's not about anybody else. Like, we all find a convenient route to understand things. हम कोशिश ही इसी तरह से आसान चीजों को करते हैं कि आइसोलेशन में रहेंगे, स्पेशली द कॉन्सेप्ट कॉल्ड अदरिंग। तो अदरिंग जो है ना, कि वो लोग अलग हैं और हम अलग हैं, ये आसान, और हम सब एक हैं ये कहना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि जब हम सब कई चीजों में अलग हैं, कल्चरली अलग, सामाजिक तौर पर, तो उसमें अगर आपको ये कहना पड़े कि हम सब एक ही हैं, तो मुश्किल होता है। तो इंटर रिलेशनैलिटी जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है पॉलिटिकल साइंस, वो मिसिंग दिख रही कि तमाम भारत के राज्य और लोग और जो नॉर्थ ईस्ट के लोग, उसमें एक इंटर रिलेशनैलिटी का गैप वो नहीं। तो ये दूसरी बात मुझे समझ। तीसरी चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि हम सब जो समस्याएं हैं तमाम जगहों पर, चाहे आप नागालैंड, चाहे मिजोरम, चाहे, उनको हम solution, we all are looking for solution, and the problem what I have observed is, like, we are looking for solution but we are not understanding the problem itself. So problem ही नहीं समझ रहे और हम solution ढूंढ रहे। The concept of solution is that to understand the problem at first, right? Because solution lies in, सॉल्यूशन कोई अलग से नहीं है, कहीं कोई दूसरी जगह नहीं रखा हुआ है जहां से अपन खोजेंगे और मिल जाएगा। The point is that we need to look for solution in the problem itself. So if the solution lies in the problem, then we need to understand the problem with all
possible angles, right? So Nagaland ke baare mein, if I talk specifically, then most of us do not understand Naga society. Most of us do not understand the Nagas economy, right? We read on Wikipedia some information and then we make that understanding like, okay, Naga works like. Then we do not understand the political understanding of Naga society. And when we do not understand the society, when we do not understand economy, when we do not understand politics, then we look for the solution. And that's where we fail. And we fail miserably. Right. Now, if you look, before I get into the details of that, I want the whole audience to know the basics of Nagaland. The basic of Nagaland is that Nagaland has become the 16th state union of India on 1st December 1963. Right. It touches the boundary of Assam, but it, Arunachal Pradesh, but it touches the most important boundary, that is Myanmar, right, which is international. It has 16 districts, but it has 70 tribes, very good, notified. There are some other smaller tribes also, but majorly we got 70 tribes. And each tribes are very much distinct in character, customs, language, and dresses, everything. They have, unicameral legislature. They have 60 MLAs. They have almost 60 spoken dialects, which does not have a written format, right? So overall, there is one language which is called Nagami, right? So Nagami लोग बोलते हैं. अगर आप Nagami बोलेंगे तो आपको लोग समझ जाते हैं. But primarily, English is the official language and social language. शहरों में तो इंग्लिश ही ज्यादा लोग बोलते हैं और समझते हैं. वहां पर, if I talk about a little history of Nagaland and and Indian government, it started in 1892 when the British accession took place, and then 1947 Nagaland was part of Assam, so it was included in India. Then just after the inclusion, secessionist movement started, the separatist movement started. Or 1955, when India became republic in 1950, just after 5 years, Indian Army entered to resolve the problem. And 1957, after 2 years, the agreement between Naga and government of India happened. But after that, also the non-cooperation unrest continued. It's not that it stopped. 1960 was the one time when Naga People's Convention took place, and that 1960 Naga People's Convention was very important thing for India in terms of that they resolved to be constituent part of India, Union of India. And finally, in 1963, the government of India granted a statehood to Nagaland, right? And 1964, the first time the democratically elected government came to office. That is the one part. 1975, after 1964, 1975, finally, Nagaland accepted the Constitution of India. And 1980 is the 1 year when National Socialist Council of Nagaland, which is called NSCN, acronym, they came into existence, right? And that became the biggest force in Nagaland.
1988 they had a split, and 1997 finally they had a ceasefire. The latest one is 2015, where the framework of agreement was signed between NSC and one splitted group called IN and Government of India. Now, when this is the whole background. There's not much things to discuss about. The point is the questions. The questions are very, very clear. The first question, what I observed, I have visited almost 11 districts till now. And what I have observed throughout my discussion with the people and the stakeholders, that we are Naga society. We are no more. We are no different people. We are Indian, but do other people, they call mainland India. They say, do mainland India consider us as their own people? That is the question. Very crucial. And truthfully speaking, that was very hurting. They say, we eat whatever, that is stigmatized. We never question that, who eats what, but why people question us for that. So they feel that there is other way. Their grievances are very, 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 very non-serious grievances, I would say, right? Very non-serious. But these grievances are basically related to identities, right? They feel that they have an existential threat. The political scientist called Anthony Giddens, who actually brought this very understanding for us, is that there is an existential crisis. People always feel that we are endangered species, right? Till now, we have all studied हम सब पढ़ते हैं कि endangered species कोई animal होता है ना? लेकिन यहाँ लोग ही endangered species के तौर पे आपको फील करेंगे तो कैसी स्थिति बने? तो जो वहाँ का सामाजिक संरचना है, जो वहाँ की सोशल compositions है, उसमें all 17 tribes have a different dialects. All 17 tribes have a very distinct character. All 17 tribes have very distinct customs. Everything. आप बहुत visible है. सबको खड़ा कर देंगे एक साथ तो आपको पता चल जाएगा कि अलग अलग. और interestingly, सबकी अलग अलग districts भी हैं mostly. तो जैसे आओ ट्राइब है तो उसके लिए मोकुचुंग डिस्ट्रिक्ट है, कोहिमा है तो उसके लिए अंगामी है, तो इस तरह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बटे हुए. एक जो बहुत महत्वपूर्ण आपको सुनकर बड़ा ऑडियंस को बड़ा अजीब लगेगा कि नॉर्थ इंडिया ने इतना स्टिग्मेटाइज किया आंख की साइज को लेकर कि हमारी क्लासेस में जो मास्टर्स के बच्चे हैं मोस्टली गर्ल्स हैं, बिकॉज नागालैंड में गर्ल्स एजुकेशन को लेकर बहुत ज्यादा सिंसियरिटी है. सो आउट ऑफ 55 क्लास स्टूडेंट इन माय क्लास 48 जो है वो गर्ल्स हैं, राइट? सो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि लड़कियों के एजुकेशन में बहुत सिंसियरिटी भी है. इतना आंखों का साइज को लेकर स्टिग्मेटाइजेशन हुआ कि कई लड़कियों ने मुझे एक ऐसी बात बताई. उन्होंने कहा कि सर हम लोग अपनी आंखें बड़ी करने के लिए ना कई तरह के मेडिसिनल यूजेस करते हैं और कई तरह का फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमारी आंखें बड़ी. राइट. सो लुक व्हाट वी हैव डन.
we have reduced a human personality to this, right? कि अब वो आंख बड़ा करने के लिए अपना प्रयास करते हैं कई लोग। तो उनका मेकअप जो है they were saying that कि सर हमारा जो मेकअप है ना वो हम इस तरह से करते हैं ताकि हमारी आंखें बड़ी दिखें। आंखों से दिखना तो कम नहीं है, लेकिन आंखों का इस तरह से चिंकी छोटी आंखें है ना, बोलते बोलते ये उन लोगों को ये लगने लगा कि हमारी आंखें हमारी समस्या है। It is not fitting into that mainstream, right? So जो पहला चीज मुझे समझ में आया कि ये मेन स्ट्रीम ही क्यों है, there shouldn't be any mainstream, right? आपने एक मेन स्ट्रीम क्यों बना दिया कि ऐसा होगा, तो आप आदमी होंगे, ऐसा नहीं होगा तो आदमी नहीं होगा। And here we need to remember one of the very great scientists of the century, that is मिशेल फूको। जब वो मैडनेस एंड सिविलाइजेशन लिखते हैं और उसमें जब वो बात करते हैं कि भाई हर आदमी अलग अलग है, तो आप उसको ऐसा मान क्यों नहीं लेते, आप उसको मेन स्ट्रीम करके। And there was a conference in Nagaland where I had to speak, and I said that when people were speaking, they were speaking mainland. And when my turn came, I simply said that there is no mainland. What is mainland India? India is India. आप mainland India, North East India, ठीक है, हम एक कन्वीनियंस के लिए बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम कॉन्सेप्चुलाइज ना करें, है ना कि जी हम तो दिल्ली में रहते हैं तो हम तो राजधानी, ठीक है ना, हम तो पावर सेंटर में रहते हैं तो हमारा तो सब कुछ चलेगा। ऐसा करने से ही हम कई बार चीजों को बहुत ज्यादा अलग कर देते हैं। और नागालैंड के साथ भी जब मैं पहुंचा वहां पर, तो व्हाट आई ऑब्जर्व दैट पीपल वर सेइंग ये तो सांप खाते हैं, बिच्छू खाते हैं, बट व्हेन आई विजिटेड द मार्केट आई सॉ ऑल द फिश, है ना, जो मैं बिहार से हूँ, हमारे बिहार में सभी उस तरह के फिश खाते हैं, लेकिन उनके लिए ये कह दिया गया ये ऐसे खाते हैं, राइट? That was really heartening for me when I heard the story of the girls, right? And they do everything to become mainstream. Okay? All those youngsters, they speak quite fluent Hindi. वो प्रयास भी करते हैं कि हमें हिंदी बोलना है to be mainstream, right? तो ये स्टिग्मेटाइजेशन, अदरिंग जो है वो वहां पर मुझे बहुत ज्यादा दिखता है, राइट? और ये ऐसा नहीं है, यूपीएससी या बीपीएससी और तमाम जो पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वही थोड़ा बहुत नागालैंड के बारे में जान रहे हैं, बाकी देश में बहुत लोगों को पता भी नहीं। और ये बात मैं नहीं कर रहा, आई एम नॉट सेइंग दिस, दे आर सेइंग दिस। Do they know that we are in India, right? That they in a informal discussion they always claim, sir, when we sit in canteen, when we sit together to talk, they say, sir, do they really know that we are in India, right? So when you want to be India, right, then you need to know that. And I'm not saying that all people, जो गांव में कोई खेती कर रहा है उसको क्या मतलब, वो जाने या ना जाने, जाना तुम्हें भी चाहिए, लेकिन जो हमारा एजुकेटेड स्ट्रीम है उसकी समझ में भी ये सारी चीजें। One interesting thing came to our discussion is that, sir, people qualify UPSC and they get Nagaland cadre and they don't join. Why do they not join? Is it not the place to serve? क्या यहाँ पर नहीं करना चाहिए लोगों को? So, right. Now coming back to the other thing, they want integration, not assimilation. This is we want integration. Integration means कि अपनी आइडेंटिटी को हम बचाते हुए भी साथ रह सकते हैं, है ना?
इसको इस तरह से समझा जाए कि आप पूजा है, मैं दीपक भास्कर हूँ। साथ रहने के लिए अगर मुझे साथ रहना होगा तो ऐसा थोड़ी होगा कि मुझे लड़की बनना पड़ेगा, है ना, मुझे अपनी आइडेंटिटी लूज करनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो किसी को किसी के साथ रहने के लिए उनकी आइडेंटिटी को चेंज करना बिल्कुल जरूरी है और नहीं है। That happens in assimilation when you lose your all identity and you become other. आप एक जो डोमिनेंट आइडेंटिटी है उसके तरह के हो। मान लीजिए दिस वाज अप्लाइड बाय फ्रेंच, ये फ्रेंच लोगों का कॉलोनियल पॉलिसी कि हम जहाँ रूल करने जाएंगे तो सबको फ्रेंच सिखाएंगे, सबको फ्रेंच कल्चर में डाल देंगे, सब फ्रेंच हो जाएंगे, so they will never feel who is ruling them, right? And that was very quite successful. Integration is more important. You see, we don't have any problem. The question that whether Nagaland is part of India or will not be part of India, that is not a question there at all. I'm telling you. ये सब इधर ही है, नॉर्थ में ही ज्यादा ये सवाल चलते रहते हैं कि वहाँ डिस्टर्बेंस है, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं. Their question is that when we will be integrated, not assimilated. Why should we look like North? Why should we wear like North? Why should we eat like North? Why should we not be what we are? Right? Then I always say that, see, there is no others. That's what I believe. You know, I may sound a little different, but I don't believe that there is any other concept of othering is not at all existing in this world. So there is no others. We cannot live in isolation. So isolationism has never been maintained by any individual, society, country for a longer period. You cannot do it. And now in 21st century, 2023, we will live in a time where we cannot afford to be in isolation. Right? There are issues, and the issues are very much well grounded. There is a developmental issues, too much, right? In the name of conflict, the only thing what has not happened is the minimal development. The connectivity is the biggest issue. If you want to cross, you know, if you want to travel 40 kilometers, you will take around 6-7 hours. It's not because of mountain. Mountain तो हिमाचल में, शिमला से दिल्ली जाने में कितना वक्त लगता है, कितना comfortable जर्नी, लेकिन वो नागालैंड में नहीं. Development, scratch, बहुत problem. So they say that why we are not considered, right? We are constitutionally, you know, having a special status, but still we do not have the development what we ever thought of. Development में भी बड़ा sectorial development है. Sectorial development इस तरह से है कि कुछ district like मोकोकचुंग एक district है, कोहिमा है, दीमापुर है, ये सब district थोड़े बहुत develop लगेंगे आपको in comparison to others. But like Eastern Nagaland, which borders with Myanmar, international boundary, no development. No. बहुत ही miserable है, बहुत miserable है. But when I go and I talk, I say like, yes, you have an issue, but where is the demand? Issues है, but वो demand में convert. और as a political science student, मेरी understanding ये है कि until unless democracy में demand generate नहीं, तब तक supply भी नहीं. अब issues demand में convert क्यों नहीं हो रहे हैं, ये बहुत issues demand में इसलिए भी convert नहीं हो रहे हैं क्योंकि society अभी तक
क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग में अपने आप को एडजस्ट नहीं करते। यूजुअली लाइक बिहार है, यूपी है या तमाम ये सोसाइटी अपने आप को एक बड़ा सेक्शन क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग में भी अपने आप को एडजस्ट किया है। इसलिए यहाँ डिमांड कि हमारे यहाँ ये क्यों, वहां ये बात शायद नहीं पहुंची कि हाउ टू कन्वर्ट इशू एंड व्हाई डिडंट हैपन। इट डिड नॉट हैपन बिकॉज आप कई दशकों से एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग लेकर चल रहे हैं। सोवरेनिटी सोवरेनिटी सोवरेनिटी, उस लार्जर अंडरस्टैंडिंग में बाकी सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज। तो what we can do, what I have done is like I have divided the society in age groups. The older generation, they are too much into their own understanding. Middle generation is still carrying the older understanding of Nagaland, but नए जो द न्यू जनरेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है, नई सदी की जो सोच है, वो भी थोड़ा बहुत उनके पास है। बट पूजा जी, अमेजिंगली द यंग जनरेशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ओल्डर जनरेशन. They are saying, no, we don't have that question. The question of sovereignty is not a question for us. Because they have become interestingly global. And one of my PhD students is working upon this. Interestingly global, why I'm saying this? Because suddenly BTS, the Korean music band, have reached to the youth somehow, right? And most of the young generation are BTS generation, right? So their question is to become global. They want to come out. And here, this is the right time when somebody wants to come out from the older understanding, you need to intervene and you need to take them out. But we are missing that. ये जो टाइम है वो हम मिस कर रहे हैं, ये पीरियड हम मिस कर रहे हैं। हमारे तरफ से ओपन नहीं हो रहा है जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज. The young generation wants to go out and do something, but उसके लिए वो स्पेस, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि वो इतना स्टिग्मेटाइज, अच्छा यो नागा और ही मे बी ईटिंग डॉग, इनको हम कैसे जॉब में रखें, राइट? इतना स्टिग्मेटाइज कर दिया है कि अदर एवेन्यूज पर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिनिमल हो जा रहा है, राइट? And that's why I said that we do not at all, take them into our consideration. The society is willing to break the egg, cells, but we are not opening the cells. That is the basic thing. Now, let's understand, apart from these issues, let's understand the politics. The Nagaland is a very different kind. All 17 tribes have their own distinct political understanding. Or mostly क्या है? Village. Village sovereign. Village का ही सब कुछ, आप इस तरह से समझिए उसको. Land belongs to village. अच्छा, when I use the word land,
लैंड को लेकर इतना इमोशनल अटैचमेंट है नागालैंड में जितना शायद ही कहीं, वैसे इंडिया में और भी जगह, बट लैंड को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनली दे आर अटैच्ड। एंड लैंड बिलोंग्स टू विलेज, और विलेज की अपनी व्यवस्था है, अपना सिस्टम है। उसमें वो जो वॉरियर थे, जो लड़ते थे, पहले तो विलेज एक दूसरे से ही लड़ते थे बिकॉज दे वर सॉवरेन, राइट। और हर विलेज में एक मोरंग होता है। मोरंग वाज लाइक कम्युनिटी हॉल टाइप, है ना। और वहां पर जो वॉरियर लड़ते थे, किसी का इसको मारते थे, उनका सर काट करके वहां टांग देते थे, तो वहीं पर वॉरियर रहते भी थे। वो बड़ा एक एक्सप्रेसिव अंडरस्टैंडिंग था मोरंग, राइट। नागालैंड में एक न्यूज़पेपर भी चलता है उसको लेकर, मोरंग एक्सप्रेस, राइट, और काफी फेमस भी है। तो विलेज एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे और एक दूसरे से लड़ रहे थे। और जो हेड हंटिंग का जो आपने सुना होगा, कई लोग सुनते हैं कि सर काट, वो ऐसा ही होता है। वो आपस में ही, जो एक किंगडम दूसरे किंगडम से लड़ता था, उसमें ये कल्चर था कि जो दूसरे किंगडम का सर काट के लाएगा उसको इनाम मिलेगा, यू नो, ट्रॉफीज मिलेंगी, तमाम चीज। तो वो हेड हंटिंग हो रहा था। बट वो ब्रिटिश के बाद तो बंद ही, बिल्कुल ही बंद। विलेज अपना लैंड दे रहा है वॉरियर को, और उसका जो पूरा लीनियज है उस लैंड को होल्ड कर, ये व्यवस्था। अब इसमें इफ यू नो इफ वी intervene to change the status of this kind, that becomes valid. ये हुआ when government of India ordered that there should be Article 40, means panchayat and municipal corporation elections, that was dissented in, because उनका विलेज का जो डेमोक्रेटिक अंडरस्टैंडिंग है ये है कि हम सब साथ में कंसेंट बेस्ड डेमोक्रेसी के अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है। सो वी डोंट वांट, उसके भी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, बट उनको उन्होंने नहीं एक्सेप्ट। नाउ एक बात परसेप्शन है नागालैंड के बारे में, तो ये सबको जानना भी चाहिए कि लोग ये मानते हैं, हमने भी ये सुना था कि नागालैंड मैट्रियार्कल सोसाइटी है, which is totally wrong. Nagaland is not patriarchal society. It is very strict patriarchal society, very strict. Right. In fact, पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ जब नागालैंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 2 महिलाएं जीत गई, ये पहली बार हुआ। सो इन 2023 अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ रहे हैं कि कितना लेट हो गया। और ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि नागालैंड इज अ मेट्रियार्कल, व्हिच इज नॉट। सो लैंड बिलोंग्स टू द मेल वन। अगर किसी मेल को, मान लीजिए मेल चाइल्ड नहीं है, तो उसमें भी ये रूल है कि वो लैंड जो हमारे अंकल होंगे उनके पास है, राइट। जो हमारा ब्रदर होगा उसके पास, जो हमारा कजन होगा ब्रदर, उसके पास आएगा, बट लैंड विल नॉट गो टू वुमेन। दैट इज व्हाट। सो अब इस चीज को अगर आप देखें तो इसको डिस्टर्ब करने का कोई चांस फिलहाल नहीं। अब करना क्या चाहिए, जो हमें करना है, राइट। ये सब तो प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स ये है, और उसमें एडिशनल अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी कैन डू इज लाइक व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, स्टिल आई एम वर्किंग, सेइंग बहुत मैं रॉ हूं अभी। यू should not expect a very finest thing from me now, because मैं खुद ही काम कर रहा हूँ। तो ये कहना बहुत अनुचित होगा कि एकदम सब मैं जान गया हूँ। मुझे ये समझ में आ रहा है कि सोशल चेंज टेक्स
time. If I do not say a lot of time, I say time, considerable time. Until unless you change the social structure of Nagaland, you understand the social structure of Nagaland, you adjust your political understanding in their social structure, you will not get anything, any chance to do things. Okay. Right. ये तो स्ट्रक्चरल है, और स्ट्रक्चरल होने की वजह से जो प्रॉब्लम है वो हम लोग बात कर रहे हैं। अब समय के साथ क्या हुआ है कि वहां पर एक क्लास फॉर्मेशन, यूजुअली इट वाज अ ट्राइबल सोसाइटी, वेरी कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी। सो किसी के घर में खाना नहीं है तो वो मिल जाए कम्युनिटी के थ्रू। नागालैंड में आपको एक भी शायद बेगर ना मिले, ये सभी मैंने देखा है, कहीं पर तो बेगर नहीं मिलेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि वहाँ जो बिहार में, यूपी में और तमाम देश के दुनिया की जगहों में समस्या है वो वहां पर ये कहना कि सारे ट्राइबल लोग बड़े ईमानदार होते हैं, ये भी बहुत ही जनरलाइज अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं। तो मतलब आदमी है तो आदमी हर तरह, उसमें आप what we can do is like what I have thought। अभी तो मैं जाऊंगा वापस तो चुप सकते होता है। It's like their social milieus, their cultural milieus, all these things needs to be considered in policy. They have religion, they're not quite religious, right? They're like, okay, fine, this is my religion, this is my private affairs, nothing to do with politics, something like that. But extent of the people from Nagaland to other part of India and from other part of India to Nagaland is the necessary thing to it. Correct? Necessary. Open the avenues for Nagas all over Nagaland. Right? Treat as like a brother and sister. That's something is advisable, which one need to do. They are not they. They are we. That division between we and they, that something needs to be stopped immediately. After 2015, when this framework of agreement has been signed, they were quite hopeful. But in 2019, when the Kashmir things happened, the special status was withdrawn. The apprehension is there in Nagaland as well. That what if we lose our special status? Right. Saying this, that, you know, they're not paying tax, they're not doing this, they're not doing that. These questions are very unnecessary these days. I find like this tax nationalism and all is very problematic. We need to understand the situation everywhere. Right. Yes, everybody needs to pay taxes. That is okay. But at the same time, we need to understand that sovereignty, territoriality, the population of a state is managed very differently. It is not black and white such a way, right? You can have black and white program on television in society. There are multiple gray areas, right, where we need to work. And
especially I feel very emotional and very disheartened when I meet people, when I hear their story, that how have I been treated in Delhi, how have I been treated in Mumbai. वो बहुत डिस्गस्टिंग है, वो एकदम अनुचित है। अगर मैं कभी कभार सोचता हूँ कि अगर नागालैंड अलग दुनिया होती तो भी क्या हम उसके साथ ऐसा ही करते, वो तो हम किसी के साथ भी नहीं कर सकते, तो हम ऐसा क्यों करते। 2015 और कश्मीर स्टेटस के बाद वहां पर बहुत ज्यादा एप्रीहेंशन है जैसा नहीं, और उसको लेकर के हमें इमीडिएटली काम करना है। हालांकि interlocutors are there, they are working for, but still what I find that जिस चीज की वहां जरूरत है वो हमारे तरफ से, हमारी सरकारों की तरफ से नहीं जा रही। जरूरत है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जरूरत है वहां पर जॉब्स, opportunities, different avenues. It is very ugly to share with you that still Nagaland doesn't have a big hospital. Still Nagaland has no connectivity. Still Nagaland does not have a very uninterrupted electricity supply. Population इतना कम है उसके बावजूद। एक जगह पर ये बात डिस्कशन में आई कि is it so that Nagaland has a less population, इसीलिए हमारे यहाँ डेवलपमेंट को लेकर बहुत सिंसियरिटी नहीं। तो मुझे बहुत I was laughing at this point that it is about population. Then why we are, if it is like wherever there will be more population, they will be given more focus. Then if it is so, then why we are talking about controlling population, right? Isn't it very contradictory that at one hand you are saying like control population, on the other hand you are saying, oh, you are less populous, that's why you will not be given focus, right? That is something is very problematic. So overall what I believe that we have a lot of contradictions, right? We are saying something and we're doing something else, and this has become, Aristotle long back said very interesting thing about Indian population, that they're very contradictory, right? There's a lot of contradictions we have, especially North Indians. We need to understand this. I myself is a North Indian, and when I was in Delhi, when I'm in India, I always believe that we are finest people. No, Gangetic plain people must understand that they're populous, fine, but every other people of this country, apart from North India, is equal, and they share equal things to this country. They contribute equal. Less, more, contributions are not quantitative terms. You cannot quantitatively, talk about this. I think this shouldn't be monologue. I should stop here and when we will have some conversation that will get more things to us. That would be better way. I do not like monologue things at all. Right. So the one thing what I still feel in Nagaland, that we should not project ourselves as civilized, cultured mainstream. From there I started that I don't like the terms, some terms like mainstream, mainland. So let's not get into this trap.
lastly, there is another thing which I when this discussion started happening about increasing the number of member of parliaments, they feel so neglected that what will happen to us? We'll have no say in the government. We'll have no stake in the government. So we really need to think, research, talk, give some crucial critical understanding that how to manage this, whether should it be on population based or it should, we really need to redesign our democracy that way, because ये जो मान्यता है ना, मान लिया है कि डेमोक्रेसी जो है ना बड़ी अच्छी चीज है, ये भी अपने आप में गलत है। डेमोक्रेसी भी ऑर्गेनिक है, and time to time we need to add, some add-ons need to be done to strengthen democracy. ये करना जरूरी है और वो हम नहीं कर पा रहे, फिलहाल तो नहीं कर पा। और एक और चीज है पूजा जी की, हर चीज पॉलिटिकल तो है, बट चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, which I believe which is very applicable and relevant here in this talk also, that action and intention, there are two terms. So हमारा जो action है वो हमारे intention को collaborate करना चाहिए, right? कई बार intention अच्छी होती है, action खराब भी हो जाता है, तब भी manageable, लेकिन intention ही खराब हो, action अच्छा भी हो जाए तो manageable. So here, in the case of Nagaland, in the case of Northeast, जो उनके grievances है, जो वहाँ पर grievances है, उसके redressal के लिए ना हमारे पास जो intention है, वो Northeast तक पहुँच नहीं पा रहा। Action थोड़ा बहुत पहुँच भी रहा, but intention बिल्कुल भी नहीं पहुँच पा रहा। Whether really we are intended to integrate and develop Northeast. So, thank you very much. थैंक यू सो मच सर। मैं हमारी ऑडियंस से जो ऑनलाइन हमें जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी एक बार और कि आपके कोई सवाल है तो हमें क्वेश्चन आंसर बॉक्स में लिखिए या फिर अपना हैंड रेज कीजिए। अगर कुछ बोलना है तो मैं अलाउ करूंगी, यू कैन से समथिंग ऑन इट। केम सर, सिन्हा सर, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग ऑन इट। Yes, please, sir. Hello, the video is gone. So just okay. I must say it's a brilliant talk. I'm not very knowledgeable about Northeast, and I learned many new things. I know that some of these far-flung states, they do suffer from the feeling of being discriminated, or they have feeling of alienation. And Nagaland, of course, I have been to Northeast, some part of it in past. I have found that very rightly the speaker mentioned about civilization. Whatever little I have seen in Mizoram, Nagaland, or Arunachal Pradesh, the new generation, very well educated, very smart, and far more sophisticated than most people, young youth generation in North India. But that mindset or a complex against the people of Northeast is something really very disconcerting. The use of the word chinky or something is very disconcerting. And I do not know what is the solution to this. I would only like to know that the speaker mentioned about intention and action.
Well, at the national level, in the higher echelon, I'm sure the intention is there to integrate the Northeast population, but maybe probably action is lacking. I want to ask only one thing, that whatever it may be, is there any change in the feeling of alienation? Is there any feeling in the people in Nagaland that yes, something is being done? Or I want to know that whether the feeling of alienation is more and more. So what is the present status? And what is the way forward? And do you think, because this alienation in a bordering state is something, and in a far-flung state is very, very disconcerting. So what does the future look like? That will be my question. Thank you. Should I respond? Right? Yes, sir. Yeah, please. Thank you very much, sir. Sir, as I initially mentioned, I'm very new to Nagaland. But yes, my curiosity to learn has made me to learn little more than anybody else. Yes, alienation is there a little bit. I would not say people are still in that mode of 1960s. No, definitely not. But still, the problem what I have found is the new generation want to integrate, as you rightly mentioned, they are very smart and very disciplined, cultured, civilized, everything we can put up there. Alienation is reducing day by day. That is happening. That I can say. But when it comes to integration in the other part of India, when they visit other part of India, then they are, that alienation flare up. They're very small, numbers, population, and whenever something happened, because they have a history of discrimination, of alienation, that again get, that wound again get freshened up, right? That happens. But I and many other professors who are working there, the IAs, we all try to convince on this point that these are now part and parcel. You visit any country, discrimination, this kind of things happens, but you should not relate it to, to discrimination, deliberate discrimination. But that doesn't work because they have a history. So the history, the memories are very problematic. So that is one thing. But yes, intention. I said there is a contradiction between intention and action. I say, especially I would say one thing that Prime Minister Modi is quite popular in at a village level. Also, in very interior villages I visited, and when I visited in the election time, so like, but again, point is that the intention to resolve their problem is not being communicated to them that we have a proper intention to resolve this problem. Development, little bit has started taking place. Roads, communications, these are going on. That gives to a certain extent hope to them. But again, I would say, sir, that there is a political scientist, philosopher in
3rd century BC was written the book called Peloponnesian War, Thucydides, very popular in international politics. He wrote in one of the chapters on Melian Dialogue that hope is greatest comforter, but at the same time, it is very expensive. Nagaland, as I divided the age group in 3 categories, the younger generation is quite hopeful. But there are certain people, numbers who are existing. They keep reminding them that, you know, this very statement, that hope is the greatest comforter, but it is very expensive. The way forward is that I find that the Nagas want to be like everybody else. Nagas have opened their heart for all, but we still, you know, our government has opened, but we are not talking about government. My concern has never been government. My concern is always people. The people have not opened their heart. They still feel that when we go to Delhi to study, we do not get rooms because we are Nagas. We are from Northeast. They're like, yes. Especially the women, the girls. Girls feel very disgusted about themselves. They say that when we visit to North, they believe that all girls are quite easily available. They're modern, very modern. The modernity in terms of their clothing, in terms of their, you know, living, in terms of their friendship is very modern. But we are very problematic society in that way, I believe. That whenever somebody is comfortable, modern, we believe that, you know, they are very easy going. So the women are very bad. We need to really work out in North rather in Northeast. तो मुझे वहां जाकर यही पता चला है कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि I started saying that, you know, I lived in Delhi for long and I thought that here is civilization. But when I reached there, I believe now my way is this, that we do not need to work on a social level there in Northeast. We need to work at North. Our society has basically been closed. We are not opening the gate for the people at all. Opening the gate means not giving jobs. Opening the gate means consideration. Consideration. Consider that they are people of country, state, any country, doesn't matter. That humble approach, at least we should inculcate in our children, in our young generation. As you rightly mentioned, sir, that our young generation in North is, if you compare to Northeast, will give 10, you know, out of 10, 9 you'll be given to Northeast young generation. They're quite they want to do. They say, sir, we want to, and I felt that we talk nationalism here in North. Bharat Mata ki jai hamare liye bolna bahut aasan. But bordering states are true nationalists. जो border पे रहते हैं ना दूसरे देश के, उनके लिए भारत से ज्यादा कुछ भी नहीं था. I visited borders. वहां भारत, तो वहां पर ऐसी बातचीत में सर हम लोगों ने एक ऐसे ही कुछ आर्मी ऑफिसर्स, कुछ IAS, सबसे बातचीत हो रही थी, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि यहाँ आके लगता है कि भारत इधर है, महाभारत है उधर, है ना. तो उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब महाभारत है.
भारत तो इधर ही है ना, कि बॉर्डरिंग स्टेट में नेशनलिज्म बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा है। और सॉल्यूशन समाज के लिए, सोसाइटी का सॉल्यूशन सर क्या ही निकालेगा, समाज को तो खुद ही बदलना पड़ेगा। और इसीलिए आई रिमेम्बर डॉक्टर अम्बेडकर सेड वेरी राइटली दैट वी नीड टू, सोशल चेंज टेक्स टाइम। हम काम करना होता है कहीं और काम करने लगते हैं कहीं, जैसे है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर इट्स लाइक, कई बार दिल्ली में जब भी कभी कोई अप्रिय घटना होती है ना, टीजिंग हो गया, रेप हो गया, तो अपन टीवी टॉक में एक ही बात करने लगते हैं कि हमें मर्दों की सोच बदलनी पड़ेगी। नहीं नहीं, हमें सोच उस कहीं बदलने वाली चीज थोड़ी होती है, वो कोई क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है जिसको आप बदल सकते हैं। वी नीड टू चेंज द स्ट्रक्चर, हमें स्ट्रक्चर बदलने की जरूरत है, और वो स्ट्रक्चर बदलने के लिए हम तैयार ही नहीं है। हम पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर में विमेन का इक्वल स्पेस ढूंढ रहे हैं। ये कैसे होगा, ये तो होगा। तो ऐसा भी नहीं है कि वी नीड टू हैव अ मैट्रियार्कल स्ट्रक्चर, उसमें फिर मेल का स्पेस नहीं होगा। वी एज लाइक, मैं बार बार यही सोचता हूँ सर कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी करते करते कितना वक्त हो गया, 3000 साल हो गए। वी हैव नॉट बीन एबल टू गो बियॉन्ड 6 क्लासिफिकेशन ऑफ एरिस्टोटल। जो एरिस्टोटल ने 6 क्लास दिया कि हाँ भाई, मोनार्की है, एरिस्टोक्रेसी है, ओलिगार्की है, डेमोक्रेसी है, उससे बियॉन्ड ना हम सोच ही नहीं पा रहे। We have not been able to think about a new structure in society. वो हम सब के लिए समस्या है। मैं बार बार अपने कमरे में बैठकर अपने ऑफिस में यही सोचता हूँ, कर क्या रहा हूँ मैं एज ए प्रोफेसर। मेरा जो काम है ना, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि नया स्ट्रक्चर पे हम कब काम, हम रिवोल्यूशनरी नहीं है, बट हम रिफॉर्मिस्ट होते हुए भी तो हमें बहुत साल हो गए। तो वी आर अनेबल टू चेंज द स्ट्रक्चर। हमें नॉर्थ में लोगों की स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग पर काम करने की जरूरत है। I feel so. Yeah. Lastly, I would say open the gate for the Nagas. Not only open the gate for opportunities in towns, it's like welcome them, not like guests, but like our own. That they are quite innocent in terms of. अच्छा, नागा में इंटरेस्टिंग एक बात है सर, एक बार वो आपको बुरा मान गए कि सिंह सर अच्छे आदमी नहीं है, तो फिर आपको ना एक जिंदगी तो लगी जाएगी ये परसेप्शन तोड़ने में। इतना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, एक बार बन गया बात की यही ठीक है, तो फिर वो यही ठीक। ऐसी सोसाइटी में आप बहुत डेलिकेटली चीजों को प्लेस करते हैं। किसी भी तरह का हड़बड़ी या जल्दबाजी अच्छी बात नहीं, जहाँ इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो अप्रोच में। मान लिए तो मान लिए, फिर वो बदलते ही नहीं। ऐसा नहीं है कि, बिकॉज ये डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग वहां पर कम दिखेगी। हाँ, नागा यूथ करप्शन से बहुत परेशान। नागालैंड में क्लास स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ नागाज अमीर हो रहे हैं, बाकी ज्यादातर गरीब होते जा रहे हैं। ये सब जो समस्याएं नॉर्थ में है, वहां पर भी है। तो ओवरऑल कोई सोल्यूशन अपन अभी इधर भी नहीं निकाल पाए हैं, तो उधर भी नहीं निकाल पाए, और जो सॉल्यूशन है उसको लेकर हम काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। हमें वो सब फ्री बीज लग रहे हैं, वो सब हमें वेलफेयर अंडरस्टैंडिंग, हमने वेलफेयर स्टेट को फ्री बीज स्टेट बना दिया है। तो ये एक नया टर्मिनोलॉजी सर हमने इजाद किया है हम लोगों ने, कि वेलफेयर स्टेट जो है ना, वो फ्री बीज स्टेट, रेवड़ी स्टेट। अपन डायरेक्शन लेस होते जा रहे हैं, मतलब ओवरऑल नेशनल अंडरस्टैंडिंग पर भी देखें तो वो चीजें हैं सर। Nagas are willing to come and sit with us. हमने ही टेबल नहीं लगाया, हमारा डाइनिंग टेबल पे उनका चेयर नहीं लगेगा, तो फिर कैसे चलेगा? That's something I feel. I respect people there, sir. Their IAS, their IPS, district state.
बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने मतलब वहां जाकर के मुझे सर महसूस हुआ कि अच्छा आईएएस ऐसा होता है। नॉर्थ में तो हमने देखा लाल बत्ती, लाल लश्कर, पब्लिक दूर से खड़ी रहे। हमने वहां जाकर के देखा कि वो इंटीग्रेशन वाली बात पर बहुत ज्यादा फोकस किया, हमें लोगों को जोड़ना है। तो वो बहुत आसान अपने आप को रख रहे हैं, बहुत सहज रख रहे हैं, क्वाइट इजीली अवेलेबल। बहुत सारी और भी चीजें हैं, शायद कभी और ज्यादा मैं समय मिलेगा तो इस पे बात होगी शायद। Thank you very much. Can you hear me? Yes sir, thank you very much. नहीं, you explained everything very well. मैं एंड में एक ही बात कहना चाहूंगा जी सर। कि आपने शुरू में ही कहा perception is very important. Yes sir. And mindset and perception are related. Yes. Now, ये मेरे ख्याल से I may be wrong. Yes sir. But ये प्रॉब्लम एक कॉमन इंडियन का है। Yes sir. जो आप कह रहे हैं, देखिए ऐसा है। I belong to Bihar. I don't know which state you belong to. I belong to Bihar, sir. You belong to Bihar. Yes. But I have been also out of Bihar for last more than 50, 60 years. But even now when I go to Bihar, yes sir, knowing very well that Bihar is lowly placed in all parameters in the state. Yes sir. But if you talk to a common Bihari who has Yes, never sir. gone out, Yes. he has a very strong sense of self-pride, and Yes. he looks down upon Yes sir. every individual of every other state other than Bihar. For him, Bihar is the greatest. I don't know whether you agree with me or not. Yeah, because no, I agree. he has had no exposure. But this is Yes, not sir. only true of Bihar. This Yes, is sir. true of probably most states. Like from Yes. Tamil Nadu, Tamilian culture is great. Yes, But then sir. they also feel they are great. Very Yes, rightly sir. or wrongly. Do you? Yes. So everybody feels that he is the greatest. And others are. So a common jo Indian mindset of thinking hai, which may not be true in any other country which is which is more educated, which has more education, more sophistication. ये एक common problem है. उसी में now they look down upon other states, and Northeast they look down upon because they have no exposure. A common man in North India doesn't know what sort of change has come, how the people from Nagaland, Mizoram, or Arunachal Pradesh, the youth, they are more educated, more bright, much smarter, but they don't know. They also feel that they are better, and the people from Northeast are inferior. इस mindset को बदलना बहुत मुश्किल है, and that is my view. This is one of the major problems. Anyway, but it was I learned many things from your talk, and thank you very much. It was very enlightening. I got to learn a lot of new things. Thanks for a brilliant talk, and we look forward to hearing you some other time. Thank you very much. Thank you so much, sir. सर हमारे पास क्वेश्चन आंसर बॉक्स में एक सवाल है आपके लिए. प्रिंस पूछना चाहते हैं. First of all, he said, "Thank you for giving us an insight into a society which is generally considered neglected." और इनका सवाल है, what kind of perception or association is shared by general masses and this insurgents group, and what is the general belief that masses share on our constitutions? Thank you, Prince. Interesting. मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे घर के सामने एक पब्लिक ग्राउंड है और वहाँ पर काफी मीटिंग्स होती हैं, पब्लिक रैलीज है. और as I said, मैं बहुत एक्टिव, I'm not inactive person, पैसिव बिल्कुल भी नहीं हूँ. तो कुछ भी हो रहा है तो I always go there. कई मीटिंग्स, कई पब्लिक रैली मैंने अटेंड की. And one thing what I have heard in one day talk is like the leader is saying, ये सवाल हमारे लिए अब सवाल नहीं है. This is not the question. Means the two things what is demanded, the national flag and constitution separate. नहीं, accepted. People have accepted this fact. This is not something what we demand. ये groups के demand है. Insurgent groups जो हैं वो अपने demand है.
बट आम जनमानस में, मैंने पहले ही कहा कि आम जनमानस के सवाल ही अलग है। आम जनमानस घूम रहा है और आपस में बात भी कर रहा है, बोल भी रहा है कि हमें भी तो, हमारा प्राकृतिक तौर पर तो हमारा जो स्टेट है वो काफी खूबसूरत है, लेकिन जो यहाँ व्यवस्थाएं हैं वो इतने दिन से क्यों। मैं आपको, सिंह सर ने जो बात बोली वो ठीक है, वो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आई रियली अप्रिशिएट कि अभी हमारे ओल्डर जनरेशन के लोग जो हैं, सीनियर लोग जो हैं, वो इस बात को समझ रहे थे और हम ही लोग नहीं समझ पा रहे थे कि हम कब सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी के चक्कर में फंस गए कि हमने बेड़ा गर्क कर दिया सब कुछ कर। हुआ ये है कि वहां पर इंसर्जेंसी 2015 एग्रीमेंट, मैं आपको सच बताता हूँ, इट्स नॉट अबाउट मोदी जी का सपोर्ट और अपोजिशन, whatever popularity Modi has, Prime Minister is quite popular, और उम्मीद भी बहुत है। उनको ये लगता है कि शायद ये हमारी समस्याओं का निदान इस बार हो जाए, और हमें लगता है कि ये समय ठीक था अगर सरकार इसको लेकर बहुत सिंसियरली काम करती। तो क्योंकि एक लीडरशिप की जब एक्सेप्टेबिलिटी होती है समाज में तो फिर लोग मान जाते हैं कई चीजें, ये बहुत जरूरी था। तो मोदी हैज दैट एक्सेप्टेबिलिटी, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और बहुत क्वाइट राइटली ऑब्जर्व किया है। मैं इस बात पे किसी से भी डिसएग्री कर सकता हूँ, अगर कोई कहेगा कि जी नहीं है पॉपुलैरिटी है, और ये सही समय लोग सोचते हैं, देखते हैं, उम्मीद की तरह देख रहे हैं कुछ निकलेगा सब। बट फिर सरकारों की अपनी मजबूरियां होती हैं, इसको लेकर मैं नहीं चाहता उस तरह। इंसर्जेंसी का मैं अगर बताऊं, इसको आप इनफॉर्मली रखिएगा, तो ये था कि मतलब नहीं है, वो सवाल नहीं रहा। 2015 एफओ के बाद आप देखेंगे नागालैंड में मकान बन रहे हैं, है ना, शहरों में लगातार मकान बनते हुए मैं देख रहा हूँ, चीजों दुकान खिलते हुए देख रहा हूँ। पहले जिस दिन मैं 2 मार्च 2022 को पहुंचा था, मैं तो डर गया था, 6 बजे सब बंद हो गया, दुकान सब बंद हो गया, है ना। लेकिन अभी मार्च 2023 में मैं देख रहा हूँ कि दुकानें 10 बजे तक भी खुली रही। पीस का जो मॉडल है उसमें पीस जो लोग इतने सालों बाद देखा है, वहां पर गोलियों की आवाजें कम नहीं है। ये उन लोगों के लिए काफी अलग एक्सपीरियंस है, और डिप्लोमेटिकली इफ आई से इज द राइट, वेरी राइट। और पॉलिटिक्स में, इंटीग्रेशन की पॉलिटिक्स में राइट टाइम बहुत सालों बाद आता है, इसीलिए ना कभी भी राइट टाइम को मिस आउट नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। मतलब लोग बिल्कुल रेडी हैं, बस आपको उन्हें ऑफर, सही ऑफर देना। ठीक है, वो एप्रीहेंशन जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनली हमें जो स्पेशल स्टेटस है वो हमारा छिन तो नहीं जाएगा, ये तो आपको गारंटी करना है, ठीक है, जो है वो आपको रहेगा, इतना एश्योरेंस भी काफी हो। बाकी बस मैं बार बार सर से भी एग्री करते हुए, हमें अपने कॉन्ट्रडिक्शंस पे काम करने की ज्यादा जरूरत है। नॉर्थ इंडिया के लोगों ने पॉलिटिक्स को इतना ज्यादा कैप्चर्ड कर लिया है, ऐसा उन लोगों को भी लगता है कि उनका स्पेस ही, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो स्टेक होल्डर है। और एक अंतिम बात, आदिवासी ना सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए नहीं होते, सिर्फ गणतंत्र दिवस और आजादी के दिन जो है ना नाचने के लिए नहीं होते। आप उन्हें इस तरह की चीजों में ही सिर्फ रखेंगे, फोटो खिंचाएंगे और परेड करवाएंगे, डांस करवाएंगे और अपना वीडियो रील्स बनाकर डाल देंगे,
इससे तो देश नहीं चलेगा। ट्रीट इक्वल, एकदम जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अगर आप ठीक से डेलिबरेटली करेंगे इम्प्लीमेंट, तो चीजें सॉल्व हो जाएंगी। बहुत आसान, हमें तो आसान लगता है चीजें सॉल्व। कॉन्फ्लिक्ट और अनरेस्ट में अंतर है, हम उस अंतर को अंतर नहीं कर पाते। वी आर अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अनरेस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट। सोसाइटी में जब अनरेस्ट होता है तो आप उसको ठीक ढंग से मैनेज करते हैं। क्यों है अनरेस्ट, ये देखना चाहिए। और मैं अपने सारे ऑडियंस, आपके सारे ऑडियंस से ये कहूँगा, भाई साहब आप जो लोग भी हैं ना, प्लीज प्लीज प्लीज, है ना, उनके ऊपर इस तरह का बॉडी शेमिंग मत करिए। There are people, very fine people, very beautiful people. आप मिलेंगे, बात करेंगे, बहुत प्यार मिलेगा। So treat them with love and care. Don't feel that you are giving and they are taking. गिवर वाला भी एटीट्यूड बार बार आना ठीक बात है। बस इतना ही है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। किन्हीं के पास कोई और सवाल हो हमारे आज की सेशन के लिए तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आई थिंक कोई और सवाल नहीं है सर हमारे पास। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना वक्त हमारे साथ नागालैंड की स्पेशल जो चीजें हैं, जो नई जानकारी है, जो दिल्ली या दिल्ली के बाहर जितने भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उनके माइंड में नहीं, शायद वो सोच नहीं पा रहे थे, जो आपने क्लियरली उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको बताया। सो हम आगे फिर जुड़ते रहेंगे, और इस पर नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट या दूसरे एरियाज पर भी हम लोग बातचीत करते रहेंगे। यस सर, हेलो। Kim, so you want to say something or? So इसी के साथ में आज का अपना ये सेशन खत्म करते हैं। मैं एक चीज कहना चाह रहा था बिफोर यू एंड। इट्स लाइक पॉलिसी पर्सपेक्टिव फाउंडेशन से हमारा रिक्वेस्ट है कि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी फोकस्ड ऑन मेनलैंड, सो कॉल्ड मेनलैंड। मैं चाहूंगा कि पीपीएफ जो है वो नॉर्थ ईस्ट को अपना स्पेस, और उस पर काफी कुछ लोग आप सिर्फ रख भी देंगे तो कभी न कभी किसी न किसी के काम आए। तो कई लोग हैं जो वहां पर अच्छा काम करते हैं, उन सबको आप जरूर ज्यादा बेहतर हो। थैंक यू वेरी मच। श्योर सर, हम लोग जरूर इस पर ध्यान देंगे और इस पे अपना इंटरनल डिस्कशन, और साथ में आपकी भी जरूरत होगी तो हम लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ मैं आज का दरीचा सेशन समाप्त करना चाहूंगी, और समाप्त करने से पहले एक और गुजारिश कि अगर आप हमारे साथ और लोगों को जोड़ने में मदद करें कुछ और सब्जेक्ट के साथ, तो हमें प्लीज कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर very much. Thank you very much, PPF and Pooja ji. We'll be in touch. Keep posting me about your next session. I'll join. Thank you. Should I leave now? Yeah, sure.